Hi guys, today we'll start the current affairs series again. Let me just check my audio and video. Let me just check my audio and video. Okay, let's start with the vision of okay. WHO and UNICEF releases mental health in children and young people service guidance report. So, United Nations of Children and Education. So UNICEF is yeah okay. Now the UNICEF has WHO plus the UNICEF. So the report is the mental health of children and young people. Children and young people. So it's basically a service guidance report on the occasion of World Mental Health Day, so which is celebrated annually 10th of October at the invitation and the initiative of the World Federation of Mental Health. Moving towards mental health refers to the state of mental well-being. So we know all that. So it's emerged before the age 14. So it has been written that the most of the heart conditions, the mental health conditions होती है वो 14 की एज से स्टार्ट हो जाती हैं पहले ही एंड द 18 की एज से पहले ना. An estimated 15% of the adolescents aged 10 to 19 years experience mental health conditions. So India's effort कहाँ लाई करते हैं आज के. So India's effort on the mental health are mental health care act. So this is an act to decriminalize the societal behaviors of the person. And we have also Schizophrenia Research Foundation SCARF, which is in Chennai, and Center for Mental Health Law and Policy Maharashtra. Okay, moving next, Prime Minister attended the 19th East Asia Summit in Lao PTR. So it is basically East Asian Summit. So ASEAN centrality. India stressed on ASEAN. जो ASEAN is a group of countries centrally in the Indo-Pacific region architecture. In India, Indo-Pacific regions are cooperations. So now, educational conclave at Nalanda University announcement जो इंडिया की तरफ से हुई है. India invited EAS, the East Asian countries, for heads of higher education conclave to be held in the Nalanda University, Bihar. EAS is basically Malaysia based, and its basic 19th East Asia.
Okay. Now it is basically Malaysian based, basically Eastern Malaysia, फिर Maldives, Indonesia, that type of है ना. So to promote the peace, the stability in that region. ठीक है. 18 participants of course, 10 Asian member states and ASEAN members भी हैं इसमें. 18 participants है. So 18 participants, out of that 10 जो है वो ASEAN countries से ही हैं. And out of that others are India, Australia, China, Japan, New Zealand, South Korea, Russia and US. Okay, and the ASEAN members. So we'll note down that also. Endorsed the ASEAN approach on situation in Myanmar. India reiterated that Myanmar should be engaged rather than isolated and endorsed ASEAN five-pointer consequences. ASEAN countries का फाइव पॉइंटर कॉन्सिक्वेंस है. ठीक है. Okay. Code of conduct. So this is also important issue. Now, working paper co-authored by former CE Arvind Subramaniam, multiply multiplants. This is not as an important for us. So X, uh, global hunger index. So 2024. So India is in serious category of course. So India has been released by Irish. So it is, sorry, not India. It is released by Irish humanitarian organization. Released by Irish humanitarian organization and German aid agency that will release the global hunger index. So in 05 out of 127 IND India का score, which is a serious category of course. So it is fallen of course. No, child wasting and stunting remains very high. Maternal malnutrition perpetuates child undernutrition in India, creating an integrationable cycle of poor nutritional goals. So maternal malnutrition is also very important index while calculating this. So severe designation आप देख सकते हैं. Undernourishment, child stunting, child wasting, child and is equal to GHI score. So these kind of things are calculated. So India is under here, or approximately 100.20 to 34. So this is a basic formula. So underration is nothing but insufficient calorie intake. If you want to require 2000 calories per day, but you are not consuming 2000, you are consuming somewhere between 1000 to 12,000, which is of course not a sufficient calorie intake. Child stunting is nothing, child with low height and okay. We'll just go through it once. No, undernourishment, which is insufficient calorie intake. Child stunting
which is of course the children with low height under age 5. Children's with low height under age 5. Now, child wasting is a child with low weight for their height. मतलब उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट नहीं है, which is child wasting. These are very important terms. If you want to go with further in discussion, low weight for their respective height होता तो बहुत अच्छा होता. But fine. Child mortality, die before their fifth birthday. Okay, so we have done this also. So this is calculated and we got the GHI score. Key issues are methodology. So 3 out of 4 indicators used for calculation of index are related to health of children and cannot be representative to entire population. Of course, basically अगर आप देखो तो 3 जो हैं out of this वो हेल्थ से रिलेटेड है. लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, लो हाइट अंडर दिस एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी. These are related to the child की हेल्थ एंड वन इज अकाउंट कैलोरी इनटेक. ठीक है, तो हेल्थ पे उससे ही फर्क पड़ता है पर उतना नहीं. तो यू कैन से तीनों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है ना. तो अब देखोगे कि वो एंटायर पॉपुलेशन पे फाइल नहीं होता, आप सिर्फ 5 साल से कम के बच्चों के ले रहे हो यहाँ पे, तो दैट इज वेरी लेस नंबर है. Faulty indicator. Studies challenges uses of stunting as an indicator of undernutrition. Stunting here is what? Low height under 5. Showing it occurs in well-nourished population as well. अंडर क्या हो सकता है? वो तो एक वेल नरिश्ड पीपल में भी हो रहा है ना. 25 साल का लड़का भी अंडर न्यूट्रिशन रह रहा है. दैट इज अ फॉल्टी इंडिकेटर ऑफ कोर्स. Some of the are faulty indicators of methodology, the faulty indicators and outdated डेटा सेट. तो किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए नीड डेटा सेट. इतना इंडेक्स बना रहे हो आप, लेकिन ऑफ कोर्स आप खुद घर घर जाकर तो काउंट नहीं कर रहे होगे. आप वही 2001 या 2011 का सेंसस यूज कर रहे होंगे. ओल्ड, we don't have to do with that also. NRA, National Regulatory Authority of India, uh, meets WHO International Standard of Vaccine Regulation. Vaccine Regulatory Authority. NRA as affiliated institution in all key regulatory functions according to WHO global benchmark. NRA was assessed with older GBT, but now it is like एक एक नेशनल स्टैंडर्ड होता है ना. मतलब एक नेशनल स्टैंडर्ड है हमारा इंडिया का. एक सी की जो हमारी सेंटर नेशनल लेवल के है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करती है, जो कि बहुत हाई है. एक वैक्सीन को बनाने के लिए नीड फॉर एग्जांपल वैक्सीन को बनाने के लिए नीड वेरी वेल फंक्शनिंग थिंग्स, इक्विप्ड लैब्स, उसकी बायोस्फीयर biologically you need something like clean rooms, इतने लेवल के रूम्स, इतने लेवल के रूम्स, बिकॉज नॉर्मल थिंग में वायरस के साथ काम नहीं कर सकते आप. ठीक है, वैक्सीन्स बनाने के लिए. सो यू नीड दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स, uh, that kind of mature people, the advanced technologies, and the geographical area should be like that. Okay, that is kind of thing. So that matches with the, of course, Indian, with matches with the national, the international standards. Okay,
Center notified guidelines for innovation projects components under PM Surya Ghar Muft Bijli. Ministry of New and Renewable Energy has notified operational guidelines to encourage advancement in rooftop solar technologies, business model, and integration techniques. What is this innovating project component? Objective is to support the startup की न्यू concept आए हैं ठीक है blockchain based peer blockchain is nothing the chain of the solar things है ना eligibility is nothing we don't go into that but 500 crore तक का fund 30 crore financial assistance 60% cost okay in the PM Surya Ghar Yojana let us do that so 24 nodal ministry जो है which is Union Ministry of New and Renewable Energy duration is till the fiscal year so its function is not to install the rooftop solar ठीक है subsidiary benefits भी हैं इसमें now म्यूरिन टाइफस so we'll go this है ना म्यूरिन टाइफस पे हम अभी देखते हैं we'll go into the म्यूरिन टाइफस as well okay so this is म्यूरिन टाइफस so 75-year-old man in Kerala who recently traveled to Vietnam and Cambodia was diagnosed with a bacterial disease murine typhus. So it is nothing but a bacterial disease. Mhm. So murine typhus is nothing; it's a bacterial disease first. Uh, it is an infectious disease caused by a flea-borne bacteria. Caused by flea-borne bacteria, and its name is Rickettsia typhi. Okay. Infected fleas जो होते हैं तो this kind of flea से ये फैलता है it is known as endemic typhus ना rodents like rat mice and mongoose also known to be the reservoir of the disease मतलब rats में हो सकती है ये mice से चूहों या फिर mongoose में इनको इनमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे अगर if they bite you you will get to get in touch with this virus or whatever this disease they come है ना okay bacterial disease transmission can also happen through exposure of mucous membrane infected defects देखो म्यूकस अगर वो आपके म्यूकस ओपन से पोर्स ओपन है तो उससे भी हो सकता है ठीक है cuts and scrapes of course is not spread from one to another person of course the symptoms usually appears 14 days and treatment is no vaccine currently doxycycline which is of course penicillin family new spider species so let us just go back space-based surveillance Cabinet Committee of Security has reportedly approved Phase 3 of SPS initiative, include launching various AI-powered spy satellites over 5 years to improve the surveillance. So it is basically surveillance, space-based surveillance, AI-powered
spice satellites over 5 years. तो स्पाइस सैटेलाइट भेजने का सीधा मकसद है आपके साइंस को बढ़ाना. ठीक है. ये सर. Indian suppliers are third largest provider of organizational health and nutrition support to children globally. एंड अभी आप देख रहे थे ग्लोबल इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में कहाँ है इंडिया, और यहाँ पे रिपोर्ट है कि इंडियन सप्लायर्स आर थर्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. प्रोवाइड करने में इंडिया इज दैट लार्जेस्ट प्रोवाइड, थर्ड लार्जेस्ट आउट ऑफ द ऑल द वर्ल्ड. और ग्लोबल इंडेक्स में पीछे है हम. दैट्स व्हाई द फॉल्ट कम्स ना, द रियल फॉल्ट, कि मान ली जो हम जो मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं, डेटा यूज कर रहे हैं, वो पुराना है ऑफ कोर्स. Okay, this is UNICEF Children Education Fund, which is 1946 UN General Assembly created, New York, USA headquarter. चिल्ड्रंस राइट देखना, बेसिक नीड देखना, अपॉर्चुनिटी देखना, एजुकेशन है ना, फंडिंग देखना, ऑफ कोर्स वो तो फंडिंग तो देखना है. ओके. बायोपॉलीमर. So the Union Minister inaugurated India's first demonstration facility for biopolymer. Let me just write this. First biopolymer demonstration facility. Jejuri, Maharashtra. So it is a pioneering effort in developing indigenously integrated technology for the production of polylactic acid, bioplastic, fats, vegetable oils. So these are basically biopolymer is nothing. It is nothing. It's a material that have been manufactured from biological sources. क्या हो सकते हैं biological sources? Fats, vegetables, vegetable oils, the sugars, etc. Advantage is what over synthetic. So biodegradation, decomposition हो जाती है easily ना, और कार्बन रिलीज जो बहुत कम है. ठीक है, वो रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है, दैट्स व्हाई इजी है. बायोडिग्रेडेशन, neutrality, advantages of it. So ठीक है. यूनिसेफ हो गया. इंडियाज अलाउ पीडीआर बायलैटरल कॉपरेशन. सो वी हैव डन दिस ना, अभी नो. ओके, बायलैटरल ईस्ट एशिया समिट ईएस हमने कर लिया अभी. restoration of VAT for UNESCO site by the Archaeological Survey of India. Three quick impact projects. Mekong Ganga project include preservation of heritage of life, Wat Phakre Buddhist temple and Shadow Pottery Theatre on Ramayana. India will provide a grant of 1 million for Lao PR. Laos के लिए है basically. Nutritional security with food fortification through Indian UN Development Partnership Fund के द्वारा. Okay. Biobanks. Recently, researchers identified people with an undiagnosed rare genetic disease used data for a biobank.
जेनेटिक डिसऑर्डर है डेटा बायोबैंक का डेटा से इट इज़ अ repository of biological samples like biological samples में आपके पास सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स जेनेटिक डेटा डीएनए आते हैं सैंपल्स है ना उसी से कलेक्ट हुआ है कुछ इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक वाज सेट अप इन 2022 रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद इंडियन सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल डेटा बैंक ओके Nobel Peace Prize is awarded to Japanese organization Nihon Hindankyo. Let me just write this. Nihon Hindankyo. World Free of Nuclear Weapons. Efforts achieve world free of nuclear weapons. Okay, it is a grassroots movement for atomic survival. एटॉमिक जो नोबेल पीस प्राइज है देखो ये जिसको दिया जाता है फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस फॉर एबोलिशन रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज एंड होल्डिंग प्रमोशन द कंट्रीज है ना बिटवीन इंटरनेशनल कंट्रीज 2017 it was awarded to international campaign weapons I can ठीक Aurora is a Aurora it is the highest observatory in Hanalada captured at so what is aurora? The multicolor lights that appear in upper atmosphere ionosphere. So it's a very important thing. So A-U-R-O-R-A. Multicolored lights appear in ionosphere. The upper layer captured in Ladakh captured on battery observatory. They are common occurrence at high नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको अरोरा बोरेलिस साउदर्न में अरोरा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बोल देंगे और अगर नॉर्थर्न की बात करूँ तो बोरेलिस तो इट इज डन बाय द इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन made with interaction of solar wind with oxygen and nitrogen atmosphere sign. Okay, this is a spectacular sign that our sun is electrically connected to the sun, who's connected to the socket to the your charger, your phone. Between there is a wire. This is an environment where you can see the cable. है ना? That is the cable is this. The aurora है ना? Dragon dawns is a shape environment में use हो रहे हैं थर्माइट्स थर्माइट्स रिलीज कर रहे हैं which is when ignited self-sustaining reaction makes atmosphere impossible to extinguish. This is some kind of a drone
dragon drone, and what is it is doing is uh, releasing some type of like unmanned है ठीक है कुछ ऐसा मिक्सचर अल्मीनियम एंड आयरन ऑक्साइड रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में थर्माइट बोल देते हैं उसको अगर देखो व्हेन इग्नाइटेड जब उसको इग्नाइट किया जाएगा ना उस मिक्सचर को जब इग्नाइट किया जाएगा तो वो सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन निकालेगा दैट ऑलमोस्ट बुझाना इज नामुमकिन ऑफ कोर्स किसी भी तरीके से आप उस चीज़ को बुझा लो वो नहीं बुझेगी आप तो इंटरनेशनली इट इज़ बैंड ऑफ कोर्स पर अब रशिया तो रशिया है वो तो करेंगे ही ओके न्यू स्पाइडर सीरीज सो न्यू स्पाइडर सीरीज और ये कहाँ पे देवरयांग दुर्गा देवरयाना दुर्गा ओके दुर्गा रिजर्व फॉरेस्ट कर्नाटक ओके सो न्यू स्पीशीज नेम जिसका नेम दिया गया है टिनाक टिनकाना जयमंगली origin river Jayamangali river okay it is sister species of this is not an important keep your point इसकी ये है कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक और केरला में ही हो सकता है श्रीलंका में भी और जो स्पीशीज की ऐसी जैसी हैं earthworms tens of thousands of species of earthworms are likely to be wriggling in the world soil to be discovered by scientists तो ऑफ कोर्स यार बहुत सारी स्पीशीज हैं इनकी earthworms की सो दिस इज लाइक इम्पॉसिबल ये बहुत ज़्यादा है ना पहले से आ रही हैं और अब आएंगी नई स्पीशीज लाइक नॉट इम्पॉसिबल आई वुड से बट टाइम कंज्यूमिंग थिंग बिकॉज कोई आनी चाहिए चीज़ अभी कोई आ रही है कोई पीछे चल रहा है तो दीज आर बेसिकली हार्मलेस एंड ऑफ कोर्स जो फर्टाइल बनाते हैं तो जो कि सॉइल होती है दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट है ना roundworms are small organisms that can live in your intestine which is a part of your digestive system so earthworms and roundworms so earthworms जमीन पे रहने वाले मतलब and roundworms are live in our intestine part of our digestive system they can be harmful and cause many problems belly pain fever diarrhea जो भी Kaleshwar temple so 13th century stone inscription और Viragalu has been recently uncovered renovation के टाइम पे so currently we are studying single shrine construction जो भी architecture based है इनके तो शिकारा बेसिकली शिकारा और चोलन आर्किटेक्चर में है सो वी आर नॉट एट दैट टाइम सो विल नॉट गो इनटू दिस बट न्यू इंस्क्रिप्शंस मिली हैं इस पे अभी ठीक है जो भी दीवार इसकी चल रही थी एट द वर्क archaeological alkalines what is this researchers have developed a novel method to activate alkalines using a conified cryl bronzed acid okay single bonded carbon and hydrogen atoms okay this is basically a material based
Dragon drones that we have did it. The third drone is an unmanned aerial vehicle to the ground. It consists of base station on ground and the drone, which is connected to the station through a cable drone, basically X-band radar. So after this recent devastating floods and landslide in Kerala, Wayanad district, the Union Ministry of Earth Sciences approved a X-band radar to be installed in the district. So X-band radar is a radar that emits X-band radiations, of course, X-ray radiations, जो भी EM spectrum के अंदर आएंगी, है ना? Similar wavelength allow the radar to produce images of higher resolution. However, the greater the frequency of some radiation, faster it will be attenuated, of course. Because इसकी wavelength आप देखोगे 2 to 4 centimeter बहुत कम है. Basically, it is used to monitor the movement of particles. ठीक है, सैम्पलिंग के लिए छोटे छोटे पार्ट्स ले लिए उसको कंबाइन करने के लिए, तो क्लाउड एनवायरनमेंट की स्टडी के लिए. ठीक है, radar is nothing, it will just uh, going to throw some waves and that will be reflected and the reflected waves की distance velocity physical characteristic को देख के एक इमेज बनाई जाती है. सो वेदर रडार्स को डॉपलर रडार कहा जाता है. ठीक है, ट्रांसमीटर इज समथिंग व्हिच विल लाइक ओके ट्रांसमिट द थिंग्स, है ना. लाइक रडार में एक चीज होगी जो वेव्स को फेंकेगा, एक्सरे को फेंकेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमीटर. नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर है एनएसटीआर. Okay. And we start India 2024 report. So Nagarjuna Sagar Srisalam Tiger Reserve is AIR1 All India Rank 1 among 55 tiger reserve forests. The leopard population with approximately 360 leopards. So Nagarjuna NSST है कहाँ पे? Let us go it. So NSST is in your Andhra Pradesh, offshoots of Eastern Ghats. Another thing is Nalamala Hills. Okay, largest tiger reserve in country. 5937 square kilometer. Of course, larger tiger population in Eastern Ghat. Uh, named on two dams. Nagarjun Sagar Dam and Srisalam. Two wildlife sanctuary. Two wildlife sanctuaries. One is your Rajiv Gandhi Wildlife Sanctuary. Another is your Gundala Brahmeswaram.
wildlife sanctuary constitute NSR. Okay, if Krishna towers through this reserve. ठीक है. बेसिक वेजिटेशन देखो तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है इसमें. बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट. फ्लोरा देखेंगे आप तो एंडोग्राफिक्स नलमायाना रिलियोना दिस काइंड ऑफ. फौना देखेंगे तो लेपर्ड तो है, टाइगर वॉल्फ है ना. ओके. Deciduous forest is a type of a biome characterized by the prevalence of deciduous trees. So basically deciduous का मतलब deciduous tree, which are trees that shed their leaves seasonally. अपनी जो भी trees होंगे leaves को छोड़ देते हैं. Now, serious fraud investigation office SFIU. Uh, it's not important. SFIU देख लेते हैं. It is a fraud investigation agency set up by Government of India. 21st July 2015. Fraud के देखते हैं cases. So comes under the like this. Serious fraud fraud investigation HR office. अब आप देखें तो 21 July 2015 multidisciplinary comes under the Ministry of Corporate Affairs. IT sector, corporate company, capital market, forensic सभी होंगे इसमें. ओके, मूविंग नेक्स्ट. हेडक्वार्टर आपका दिल्ली ऑफ कोर्स. forensic auditing. Okay, it is an analysis and it is in forensic audit. It is an analysis and review of the financial record of a company. Like ऑडिट करना मीन कि कोई फोरेंसिक ऑडिट मीन्स कि रिव्यू करना या एनालाइज करना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी और पर्सन टू एक्सट्रैक्ट फैक्ट्स. किसी पर्सन के या फिर कंपनी टू एक्सट्रैक्ट जस्ट द फैक्ट्स. Guess for now this is enough. Okay, so thank you for watching. We'll continue this in the next session as well. Thank you.